So now is the time to listen to the one and only one. After listening to so many people here, and including Ashok sir, our respect for Veena madam has increased. So now I request Veena madam to give her views. फॉर्मल स्पीच के पहले एक छोटी सी चीज़ बोलती हूँ. सर जैसे बोल रहे हैं कि साड़ी रिपीट नहीं किया करके, तो लास्ट 1-1.5 महीना पहले there were 3 consecutive holidays. He sat with me, he counted the working days, he took out my stock, he saw so many sarees are there or not, and then I said कितना कम पड़ रहा है गिन लो, जाके खरीद लेना और रेडी करना. That is what in one sentence that what is. Matters a lot. Formal. Respected DGM sir, अमर शर्मा सर, हमारे नोक जोक के दोस्त, मिश्रा सर, one of my ardent fan, Raj sir, my dear Ashok Kulgod, all my dear unionites, and then ex-corp, my dear friends. At the outset, my sincere gratitude to God Almighty for holding my hands when I was traveling throughout my journey and supporting me, standing behind me to make me see this day, to get out of the institution so gracefully and so peacefully and so happily. So first of all, thank God. This is very much required and very much necessary, because last 2 years what I have seen, what I have experienced with my friends, so I was always having a fear in my subconscious whether I will reach this day or not. So many of my friends have lost, so many of my friends have took VRS, so many have had to just leave unceremoniously, and so many of them retired, but they could never see this day like this. So I sincerely thank God for giving me this opportunity to retire, to attain superannuation so gracefully and so peacefully. And also, I thank God because my career, my service, my working life was always a 5-year plan. It was like a planning commission's 5-year plan. I was a post-graduation in economics, and as my one of the oldest friend told in the video, my passion was always teaching. My first priority was teaching. So I started as a lecturer in economics in my native place, Haveri. But then the main consideration was to continue in the work. I wanted to work, I wanted to continue in the work, but that time normally it was all private colleges. Getting UGC fellowship and doing MPhil and then getting into government college was very, very difficult at that time. So it was always a private college. And my father being a very, very orthodox, from a very orthodox family, and we being 7 daughters, I didn't know where he was going to get married. So during those years, as all my friends are of my age only, during those years, banking was the best choice for ladies. So leaving that teaching profession very much unwillingly, I appeared for the bank exams and I got selected. My only consideration, only motive to accept a bank job at that time was, Daddy will search an alliance anywhere in India. I may have to get married and I have to shift to that place. And if I am in bank, I will get a transfer and I will go there and I will continue the job. That was my first priority. So I switched over from teaching to banking. Then within 2 years, my marriage was fixed. And
he told many things, but many things he didn't tell. He is also from a very orthodox family, brought up brought up in Rajasthan, Ajmer. He is brought up in Ajmer, Rajasthan. So his outlook and mentality is groomed up according to the Marwadi culture. So he just few months back he had purchased the house in Goregaon and he had a loan. So he very clearly he told, you have to work only for 5 years. We have to make some financial adjustments, and once the loan is over, you may have to leave the job. So that is how it was a 5 years, first 5-year plan. So we said yes. We said yes means that time शादी करना ही बहुत important रहता है ना, जो भी बोलते हैं yes बोलना है वो time. So yes बोल दिया, शादी कर लिया. So then after coming here, fortunately or unfortunately, some developments happened in first 5 years or first 5-year plan. So leaving job after 5 years was just ruled out at that time. I said another 5 years. Just now I don't want to leave, another 5 years. He said yes, no option. He had to say yes. Then I continued. It was in the 9th year, 96. The great late T.V. Ramachandran, many of you may be knowing. He was my chief manager in Kalva Devi. He called me and made me sit across the table, and he said, Veena, I know you are going to leave after 10 years. That is what your priority. But before leaving, you have to become officer because you are so intelligent, this, that and all, whatever you have told. So you have to become officer and leave, so that at least lifelong you will have the satisfaction of, you will not have the regret of leaving the job unsatisfied. So he made me to sign the consent, and I went for the exam and I became the officer. That was a big turn in my life. 96 I got promotion and I became officer. Then immediately we took housing because officer ko zyada loan mil raha tha. So we took housing loan and we switched over to a bigger house. So again financial commitment. So again another 5 years it extended. So another 5 years it extended. In between, in 97, as many of my ex-corp people have told, I entered union. I became lady representative of Maharashtra, then Maharashtra zone. I became lady representative, and that gave a different turn to my banking. Even then, of course, it was 86 to 96, and of course maybe by 2001 I may had to leave for after another third 5-year plan. But 2001, looking at my involvement and commitment in the union activities towards my lady members, our senior friends made me secretary women's wing in Corporation Bank Officers Organization, and there I was for 10 years, and that changed the whole course of my life. Salma knows very well. That really changed the whole course of my life. Slowly I started the work, but then it changed my perception, my attitude, my approach towards everything. I traveled length and breadth of India. I visited all the branches. I met so many lady officers who were in so precarious conditions, so difficult situations. They were working with such very difficult conditions and all. Looking at all those things and attending to their grievances and all, my whole attitude in life changed, and my course in banking changed from 2001. Even then, again, it was a 5 years plan. So by 2006, maybe 2 terms I will do, and by 2006 I may resign karke. But 2006, a tragedy happened in our life. Ashok was involved. Ashok was injured in the great bomb blast of locals, first-class locals. That was again a turning point in our life. We are only 2 in Mumbai. All our relatives and पूरा परिवार बेंगलुरु में है या बेंगलुरु के आसपास है. भले आए गए सब लोग साथ में खड़े रहे, but then throughout for almost 8 months, 10 months, 1 year, I was struggling. It was not struggling. भाग दौड़ कर रही थी मैं, इधर उधर सब भाग दौड़ कर रही थी, attending to so many things, and so many things means there was railway tribunal, there was police, there was legal issues, medical issues,
And as usual, I was so committed to the work. I was in the busiest branch of Ashok One at that time. काम भी नहीं छोड़ रही थी. It was so like it was an eye opener for me in the life. So that gave me so much confidence in life that I said, क्यों नौकरी छोड़ने का, क्यों घर में बैठने का? Whatever happens, happens. I will manage my house also. I will manage Ashok also. I will manage everything, and I will not leave the job. That is what I decided in 2006-07. Those 15 months or 16 months which have been faced so much trauma in life. Even now, his audibility is damaged for 50%. But we struggled and we came out. Then again, it was always like, leaving the job only. और ये मेरा Ashok, he's so much, he's a staunch believer of astrology. He believes in astrology. जो भी मिलता है उसको जाके पत्रिका दिखाएगा. इतना सब होने के बाद भी in the back of somewhere in the corner of the mind he was having, एक कभी तो नौकरी छोड़ेगी, घर में रहेगी, मेरा केयर करेगी, मेरे काळजी करेगी, मेरा बेटे का काळजी करेगी, घर पे रहेगी. Because by that time I was so much involved in union activity also and office also that मैं पूरा घूम रही थी. तो सबको जाके पूछता था, पत्रिका दिखाता था, सबको पूछता था. तो एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला by 2013 she will leave the job. तो ये आके बोला, वीणा एक ने बोला देखो तुम 2013 में छोड़ने वाली है नौकरी. मैंने कैलकुलेट किया, मैंने बोला ठीक है, by 2013 I will complete 25 years, सिल्वर जुबली हो जाएगा, एक माइलस्टोन हो जाएगा, बेटे का ग्रेजुएशन हो जाएगा. सो छोड़ने में कोई बड़ी बात नहीं है. I will leave, I may leave 2013, I may leave. So there is कोई बड़ी बात नहीं है. तो he was happy, at least by 2013 she will leave and 8 साल तो रिटायरमेंट के पहले 8 साल तो घर में रहेगी करके. But then 2013, again 2010 also and 13 also, again some tragedies happened in life. So I said no, I will not leave, because अगर छोड़ के घर में बैठेगी तो then I will not be what I am today. So that is not myself. Myself has to be maintained, and whatever I am that has to continue. So I will not leave the job. मैं बोल ही देती हूँ, आज अभी तक किसी को नहीं बोला हमने. 2013 में मेरा घर पूरा रॉबरी हो गया. I lost everything. मैंने किसी को नहीं बोला, फ्रेंड्स को किसी को नहीं बोला. Nobody knows. तो मैं गोरेगांव ब्रांच में थी. 7:30 को घर पे आई तो दरवाजा खुला था. तो अगस्त 12th मैं सोची इनका थोड़ा सा आदत रहता है दरवाजा खुला रखे, जल्दी आ गया तो दरवाजा खुला रखे, अंदर रहता है करके. सो मैं दरवाजा देखा, अंदर गई, सोफे पे लेटा है क्या करके देखा, सोफे पे भी नहीं है. अंदर बेडरूम में, बट उसका बहुत आदत है, ऐसा ध्यान नहीं रहता है दरवाजा का. तो बेडरूम में है क्या करके देखा तो बेडरूम में भी नहीं था. तो देन आई गॉट स्केयर्ड. दरवाजा खुला है, ये नहीं है. अंदर जाके देखा तो बेडरूम में सब बिखरा हुआ था. इमीडिएटली बाहर आए, फोन किया पुलिस. बट वी लॉस्ट एवरीथिंग इन दैट. Everything we had lost. So then of course I had to work, because मेरे को मेरा वो करना था. तो मैंने बोला मैं अपने छोड़ूंगी. So हम लोग, it's not that सर हमेशा मेरे ज्वेलरी और इसके बारे में तारीफ करते हैं. तो वो ऐसा नहीं था कि it was not excise money or it was not anything. हमने दशहरे, दिवाली, गुड़ी पड़वा, पुष्या में छोटे छोटे जो लेते हैं लेडीज, ऐसे सोना लेते हैं, ऐसे ले लेके इकट्ठा करके मेरे को डिज़ाइंस की बहुत शौक है. एक्सक्लूसिव डिज़ाइंस मेरे को सेलेक्ट करके करवाना रहता है. सो फर्स्ट ईयर से मैंने ये जो पुष्या नक्षत्र में हम लेते हैं, गुड़ी पड़वा में लेते हैं, ऐसे छोटा लेके हमने इकट्ठा करके बड़े बड़े ऑर्नामेंट्स बनाए थे. एवरीथिंग आई हैड लॉस्ट एक्सेप्ट दिस मंगलसूत्र व्हिच आई वाज वेयरिंग ऑन दैट डे टू द ऑफिस. Then I said अगर अगेन मैं घर पे रहूँगी तो फिर ये सब सोचते सोचते मैं पागल हो जाऊँगी. So I will be busy in the office. So I will continue. So from 2006 when his bomb blast happened and he survived, then when I decided to continue, every year my joining date I celebrate. Every year when I complete, I say one milestone has completed. So that is how every year joining date I give a party, and I want to share my joy that I have completed 1 year. I have come to this level. I have come to this level. So that is how I want to celebrate. Even the bomb blast day also we celebrate, but this year unfortunately it came on Sunday, so I don't share all these things. So one day I was talking to Vidyasagar.
I never. Only today, because it's the last day, I may not get a chance to speak all these things anytime. So I'm just speaking. So that is how I never expected that I will see this day, and I will get so much respect, so much love, so much affection from everybody, and I will. एक VRS अलग होती है, एक मजबूरी से नौकरी छोड़ना एक अलग होती है. 60 years तक कमिटमेंट से डेडिकेशन से काम करके ग्रेसफुली सुपरएन्यूएशन पे रिटायर होना एक अलग बात होती है. दैट इज हाउ एट द आउटसेट आई सिंसियरली थैंक गॉड फॉर bringing me to this level and holding my hands when I was walking, I was falling, I was crawling or whatever it is. That is how I thank God. So thanks. So this was my journey of my banking. Then coming to all that what you have said, सच बोलो तो मैं तारीफ की भूखी हूँ. I'm always hungry for compliments. I'm always hungry for appreciation. Now, this is a fact because बचपन से मुझे कभी कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलते. कोई बेवकूफ भी नहीं बना सकता है झूठा कॉम्प्लीमेंट करके आपको. This is also true. नहीं, बट मुझे कॉम्प्लीमेंट्स कभी मिलता नहीं था. कभी नहीं मिलता था. कितना भी हार्ड वर्क करो, कितना भी सिंसियर काम करो, मुझे कभी कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलता था, तारीफ नहीं मिलता था. सो आई यूज्ड टू गेट वेरी डिप्रेस्ड आफ्टर ए very huge hard work. If I was not getting compliments, I used to get upset. So उसके लिए भी ये जाके पत्रिका दिखाता था. ये बहुत अपसेट हो जाती है, काम करती है, लेकिन इसको कभी कहीं भी तारीफ नहीं मिलता. ऐसा क्या है इसका पत्रिका काम में करके वो भी जाके दिखाते थे. So एक महाराज ने बोला कि इसको कभी तारीफ मिलेगा ही नहीं. तुम मेंटली स्ट्रांग हो जाओ, तुम मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ, तो कितना भी काम करोगे तुमको कहीं भी तारीफ नहीं मिलता है. तुम एक प्रोजेक्ट जो इतना सिंसियरली इतना मेहनत से करेगी, जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, उसका सर्टिफिकेट में तेरा नाम डालने का मौका आता है, तभी somebody else will come and he or she will snatch that opportunity और उसका नाम वो सर्टिफिकेट पे आएगा और तू साइडलाइन में रहेगी. दिस इज व्हाट इज रिटन इन योर पत्रिका. बट ऑफकोर्स पत्रिका में था कि नहीं पता नहीं, बट वो महाराज ने इतना अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि तुम स्ट्रांग हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं मिलता है, तुम अपना काम करते जाओ. इसका भी मेरे पास एक 2-3 छोटी सी एग्जांपल्स है. छोटा लाइफ के ऐसे नहीं है, करियर के. जब हम अशोकन में थे, वो टाइम पे हमको मैन्युअली 22 रिटर्न्स भेजना रहता था. मंथली 22 रिटर्न्स हम भेजते थे मैन्युअली. तो हमारे जो टोनी अभी आया था, गया क्या टोनी? अरे सो ही वाज इन क्रेडिट. एक रिशु था और एक मई थी. मैं सेकेंड लाइन में थी, DVM सो कॉल्ड DVM नाउ. सो हम लोग we took it as a challenge and we said हम भेजेंगे. हम भेजते थे, हम लोग बना के भेजते थे, but it was always used to reach by 3rd, 4th और 5th because अशोकन से हम बना के वहाँ सर्विस हमारे फोर्ट में नारीमन पॉइंट में भेजना था. सो दैट टाइम पाल सर एक हमारे DGM जो थे, उन्होंने एक इंसेंटिव इंट्रोड्यूस किया. फर्स्ट 3 ब्रांचेस जो रिटर्न्स सबमिट करते हैं, उनका DBM, अभी का सो कॉल्ड DBM, our second line will get 10 personalized appreciation. Remember? Yes. Personalized appreciation letter from me. So मैं और टोनी बहुत हार्ड वर्क से हम रिटर्न्स तैयार करते थे, बनाते थे, भेजते थे, बट हमेशा वो 3rd या 4th को जाता था. बाय दैट टाइम वी वर ऑलवेज 4th और 5th बिकॉज अशोकन से उधर पहुंचना लेट होता था. सो देन हमने बात किया, डिसाइड किया, अल्टीमेटली वी सेड ओके, सब स्टाफ को एक एक्स्ट्रा कन्वेंसी देना है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है. तो हम लोग 31st शाम को बैठ के पूरा रिटर्न्स तैयार करते थे. फर्स्ट सुबह को जो 31st का एंड का फिगर डालना है वो डाल के भेजना है, बट फर्स्ट शाम को पहुंचने तक भी 2-3 जन पहुंच जाते थे सिटी साइड के ब्रांचेस. सो हमने 31st को बना के 1 महीने में सब स्टाफ को एक्स्ट्रा दे के अर्ली मॉर्निंग भेजा और वी वर द फर्स्ट और सेकेंड. सो हमने मैनेजर को खुशी से बोला, सर दिस टाइम वी आर फर्स्ट एंड सेकेंड. उन्होंने ऑलरेडी कंग्रेचुलेशंस भी बोला, हाँ वीणा दिस टाइम यू विल गेट ए अप्रिसिएशन लेटर फॉर ऑल योर हार्ड वर्क, इट इज गुड दिस दैट एंड ऑल. And unfortunately, you don't believe, the same month the scheme changed and the appreciation letter was issued in the name of the branch head. So from then onwards, appreciation letter was to be issued in the name of the branch head, not the second line. Okay, now of course we didn't discontinue, we did the same work afterwards also.
Second, of course, many things have happened like this, but second important thing is regarding e-learning. E-learning जो we have here, we also had in Corporation Bank. There were 40 subjects, and 40 subjects with some sub-tests. It was around 124 tests. So they introduced a scheme where anybody who is completing all the 124 tests with 40 subjects, they will be issued an appreciation letter signed by the GM of ED of bank, and your name will be flashed in the email and all, and some prize incentive and all those things. So myself and Annapurna madam, we together started. We said we will complete madam this, we'll do this karke. Myself and Annapurna madam started. Annapurna madam completed before 8th March of International Women's Day, and there was a system that once in a week the list was to be announced. Yes. 40 जो complete किया उनका once in a week has to be announced. मैडम का 2-3 दिन पहले आ गया, उनका नाम आ गया 8 मार्च के पहले, मेरा 2-3 दिन के बाद कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट वीक का लिस्ट में आना था. तो बाय द टाइम 12 मार्च इनका एंजियोप्लास्टी का डेट फिक्स हो गया, तो फिर मैं उधर चली गई, छुट्टी हो गई. फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया, उसके बाद कभी हमने बैंक में गए ही नहीं. तो इवन देन वर्किंग फ्रॉम होम आई वाज ऑलवेज लुकिंग एट द ईमेल, कभी मेरा नाम आएगा, मेरा लेटर आएगा. लेटर तो आना है ना जीएम से मेरे, बिकॉज completing 40 exams with 124 tests was a big achievement, and very few ladies had done. I remember very few ladies had done there, and I had done. And मैं बोली मेरा नाम तो आएगा, एक लेटर तो आएगा मुझे there. It never came. It never came. So then he said, you find out where it is. Something must have happened. Where is that person? You find out. Then I found out who was in charge of that e-learning, and unfortunately, that person. His mother was serious and he went to native place. In the course of time his mother expired, and so he had to continue there, and then lockdown happened, and 3 months he was to be there, and by the time he came to Mangalore the whole thing had changed and we had become Union Bank, and the scheme was withdrawn. So I'm giving examples where without any of my fault I was not getting anything. So the whole thing had changed. He came, of course he called me also. Madam, I'm very sorry, but the system has पूरा change हो गया, अभी हम कुछ नहीं. ठीक है, चलो हो गया. So. But finally we have issued one certificate as best vertical head in our I will come to that. I will come to that. So then came third example. I was working from home. For 4 months I worked from home, and then all the reports were closed, and there was pressure to come here also. I got call from FGMO, this and all. Then I got, once the reports are closed, there was no point in continuing there. I got relieved. Then I joined here, and all of you know there were so many reasons I could not come to job and all. But when I joined again, rejoined after leave, it was a whole new life for me. It was a whole new life. Literally, it was a whole new life for me. Because all of you know, 34 years, what we had done what I had done in Corporation Bank, what was my status, what was my position, how much I had acquired, how much I had achieved, and what was my leave balance. 34 unavailed CL I had when I had joined here. 34 unavailed CL means 3 years I had not taken CL. So that is how I had worked. Even our Joshi sir knows how I had worked in audit. But when I joined here, at every step I had to prove myself. At every step I had to show my credibility. I have to prove what Veena Fulgod is. That was pinching me every day. Every day, evening it was pinching me. Again Ashok was telling, no, good days will come, good days will come, don't worry, don't worry. So then one day it just happened. So that is what sir initial projection was like this, madam was not talking, madam was like this, that and all. I was not able to come out of that trauma. I'll say humiliation, I'll say trauma, whatever it is. But after putting so much for 34 years, just because we have come to a new entity, at every step I had to prove myself. That was pinching me very much. And back of the mind, this is a very temporary period. I was here for short time. So I should not take everything on my head. That was in the back of mind. So I was not involving myself so much in the work. But then during I had gone on leave and something happened, and sir was also on leave, and
sir had to listen a lot from FGM sir. हाँ, शर्मा जी को छुट्टी का दिन आके काम करना पड़ा। शर्मा जी ने मेरे को फ़ोन किया, अरे मैडम आप नहीं है तो हमको छुट्टी का दिन आके काम करना पड़ रहा है। फिर सर आके बोला हमको इतना फायरिंग मिला, घर में मैं वाइफ के साथ बैठा था, फ़ोन स्पीकर पे रखा था, FGM सर इतना डांट। देन आई डिसाइडेड नो, दिस इज नॉट वीणा कुलगुड, what she has done in corporation run she has to do here also. Because of me my seniors should not be ashamed, because of me my seniors should not get blamed. So I took charge of the department at that day, and from that day onwards I vouch on sir, we never got any complaint. That was in February. Before that 3 months I took to settle down and get involved in the work and all, but then from February when I took charge of the department, tables were turned. Today morning also जयस्वाल बहुत ही तारीफ कर रहे थे उधर। इनिशियल डेज में कुछ था, इशू था, छोटी छोटी बातों पे वहाँ से जोनल ऑफिस से बोल देते थे, उनका भी एक परसेप्शन था। और मैं फिर इनका साइड लेके मैं कैसा फाइट किया था जोनल ऑफिस में लोगों से। So that is what मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा कि DGM सर को वहाँ से गाली मिल रहे हैं या शर्मा सर को छुट्टी का दिन मेरे वजह से आके काम करना पड़ रहा है, ये सब अच्छा नहीं लगा। तो आई टुक चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट एंड देन डोंट बिलीव, आप सबको मालूम है मुझे बिल्कुल ही फिनाकल नहीं आता था, मैं ओनली ऑडिट में काम कर रही थी। फरवरी में मैंने फिनाकल का F सीखा, मैंने F लिखना सीखा फिनाकल का। बट देन उसके बाद एक, जैसे सर ने बोला, एक अकाउंट भी हमारा रॉन्ग रिपोर्टिंग नहीं हुआ और हमारे फिगर का जो भी सब ने बोला दैट हैज हैपेंड। सो I'm happy, I'm satisfied that at the end of the day when I'm going out of the institution, I have made a name for CMRD in FGM. That was proved today morning. जयस्वाल सर ने बहुत तारीफ कर रहे थे FGM के सामने, FGM सर के सामने। घाटी नहीं है, रिलीव हो गया। घाटी रिलीव हो गया। जयस्वाल सर माफी मांगा, वो मुझे बहुत ही embarrassing लग रहा था। So I have turned the table, I have proved myself again before leaving this institution, and I have reinvented myself. जो बीच में 2-3 महीना 4 महीना नहीं था, और I have reinvented myself and जो मान सम्मान अभी मुझे इधर मिला, जो कॉम्प्लीमेंट्स, हाँ जो कॉम्प्लीमेंट्स और अप्रिसिएशन की बात कर रही थी, उसके लिए यह आया। तो ये जो 6-7 महीने में यहाँ पे जो जितना सम्मान मिला, जितना प्यार मिला, जितना अप्रिसिएशन कॉम्प्लीमेंट्स मिला, DGM सर का एक दिन भी ऐसा नहीं गया प्रेयर मीटिंग में CMRD के बारे में बात करे बिना या वीणा मैडम के काम के तारीफ करे बिना, एक दिन भी गया नहीं है। सो पूरा लाइफ में जो तारीफ नहीं मिला, पूरा लाइफ में जो कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिला, वो ये 6-7 महीने में मिला है। उसके लिए मैं बहुत 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 cherish for the rest of my life. So thank you very much sir for that. It's all your commitment. ऐसा नहीं है कि ज़्यादा टाइम हो रहा है। मेरी वाइफ का नाम सेवा, this is not the reason. ज़्यादा टाइम ले रहे हो, फिर भी 1-2 चीज़ और मुझे बोलना है। थोड़ा सा मैं अशोक के बारे में भी बोलती हूँ, थोड़ा सा इनके बारे में भी बोलना है। जो नज़दीक से देखा है उनको मालूम है, we are both are totally different individuals with different approach to life, different working style, different ideology, different thinking process, different lifestyle. Everything is different. Everything is totally different. But वो बोलते हैं ना, opposites attract each other. So लड़ते झगड़ते हमने 33 years साथ में निकाल लिया है. But he is always my friend, philosopher and guide. He is always, वो जो बोलते हैं आपको पता है कि 2 AM फ्रेंड बोलते हैं। अगर कोई बहुत ही कंफ्यूज रहेगा, बहुत ही दुखी रहेगा, बहुत ही कुछ वो रहेगा, तो नींद खुल जाता है, रात को नींद नहीं आता है, तो किससे बात करें? तो एक 2 AM की फ्रेंड होता है या 4 AM की फ्रेंड होता है, मतलब उसके साथ आपको बात करने को झिझक नहीं होता है, कभी भी आप कॉल करके बोल गए। सो ही इज माई 2 AM फ्रेंड। सो कभी भी मैं उसको उठा के मेरा कहानी सुनाती रहती हूँ, वो सुनता रहता है। ऑफकोर्स ही गिव्स सॉल्यूशंस आल्सो। तो जो इनिशियल डेज में जहाँ इधर जो मुझे होती है, एवरी डे इवनिंग वो मैं मुझे ब्रेन वॉश करता था, उसके हिसाब से मैं वापस अगले दिन शांति से आती थी और काम करती थी। सो हिज जो ज्वेलरी साड़ी के बारे में बात करते हैं सब लोग, फ्रॉम सेफ्टी पिन टू ज्वेलरी ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग।
So that one sentence will define everything. From safety pin to jewelry, everything he takes care. He cares for everything. He cares for my appearance. He knows if I am well dressed, I am happy. मैं माइंड में खुश रहेगी तो बाहर भी खुश रहूँगी. सब चीज़ें स्मूथली चलता है. That he knows. So he always sees that I am well dressed. वो खुद नहीं करेगा, खुद कुछ नहीं करेगा वो. But he always sees me that I should be happy. So he was more ambitious for my career than his career throughout. He was always telling, if you continue in the bank, you should become general manager. If you continue in union activities, you should become general secretary. Nothing less than that. Throughout his ambition was that, and accordingly he supported me also. But unfortunately, I could not do both of them. But whatever I am today, it is only because of his support and his encouragement. So whatever I am today, I am happy with that. I am satisfied with that. किसी ने बोला फैमिली कमिटमेंट से प्रमोशन नहीं लिया करके, बट आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स फॉर दैट. Wherever, whatever stage I was, whatever level I was, I have worked sincerely. So I am happy for that. I am happy for spending 33 years लड़ते मरते उनके साथ. Then all my dear friends, इतना तकलीफ लेके सब लोग आए हैं. तो आप लोग आने से, जो साड़ियों की कलर की बात करते हैं, आप लोगों के कलर मेरी ज़िंदगी में चढ़े हुए हैं. आप सबके पैर मेरी ज़िंदगी में चढ़े हुए हैं. तो उससे मेरे को उम्मीद होती है, शौक होती है, इंटरेस्ट आती है. एक मैं किसी को बोल रही थी आज, मिश्रा सर को ही बोल रही थी, सबको अच्छा लगता है लेकिन दिल से तारीफ करना बहुत बड़प्पन होता है सबका. सो सबको नहीं आता है वो दिल से तारीफ करना, सबको नहीं आता है. जो जितना तारीफ मुझे मिलती है उतना मेरे शौक बढ़ती है, उतना मेरी इंटरेस्ट बढ़ती है, मेरा एंथुजियाज्म बढ़ती है. सो ऑल ऑफ यू केम एंड आज का दिन इतना कलरफुल बनाया मुझे, सो उसके लिए थैंक यू वेरी मच. और जो हमारे यूनियनाइट्स हैं यहाँ के, एक तो सबसे पहले प्रवीण के बारे में बात करना, ये तो मेरे हाथ से आज जहर खाने को बैठे. So anyway, बहुत प्यार मिला मुझे. सब बच्चे लोग हैं, 2-4 ही मेरे एज के हैं, बाकी सब बच्चे लोग हैं. बहुत प्यार मिला. राजेश से, षणमुख से, रोहित से, अभिजीत से, बहुत हक से मैंने डांटा है, हक से लड़ाई किया है, हक से काम करा के लिया है. बट एक प्यार है, वो डांटने के पीछे भी प्यार है. बुरा मत मानिएगा, थोड़ा बहुत गुस्से में ज़्यादा बोला है, बुरा मत मानिएगा. बहुत प्यार मुझे मिला है, बहुत मान सम्मान मिला है. सो आई एम लेइंग डाउन माई ऑफिस विथ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन, लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन इन माई माइंड फ्रॉम ऑल ऑफ यू, विच आई विल चेरिश फॉर एवर एंड एवर एंड एवर. एक विद्यासागर के बारे में 2 शब्द मैं बोलूँगी. 2 शब्द जरूर, और किसी के बारे में बोलना है तो भूल गई हूँ मैं. विद्यासागर के बारे में तो जो वो कब से जाने का उतावला था. फैमिली उधर है, छोटा बच्चा है, और जब भी मैं, अरे तुम 31 तक रहो बोले तो मोबाइल से फोटो दिखाएगा. इसको देख के कौन इधर रुकेगा मैडम, कैसे रुकेगा मैडम करके. वो अपना बच्चे का बहुत प्यारा बच्चा है. अभी 2 दिन जाके भी आया, इतने में वो 2 दिन जाके आया. उधर से आया, बस में आया. हाँ, बस में आया. हाँ, नहीं 2 दिन इतने में जाके भी आया. वो बोल रहा था कि he broke down, but then after that he traveled and came. But ultimately I knew his involvement will make this more colorful and more interesting. Of course, मेरी soul sister है उषा, वो भी चली गई थी 3 दिन. और ये मचाड़ो किधर तो था, वो नहीं सुन रहा था मेरा. मैं बोली ये तो ये लोग सब एक बुके दे के भेज देंगे मेरे को. अल्टीमेटली वहाँ पे भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लाइफ में वहाँ पे भी कुछ नहीं मिलेगा करके मैं. बट देन एज आई सेड, जो जिंदगी भर जो नहीं मिला वो ये 10 महीने में इधर मिला है. और जो 35 इयर्स जो मैं क्रेव कर रही थी वो आज मुझे मिला है. सो थैंक यू वेरी मच ईच वन ऑफ यू. मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया, लेकिन मैं दिल खोल के मुझे जो बोलना था वो सब मैंने बोला. थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट हियरिंग फर्स्ट एंड देन अंडरस्टैंडिंग मी एंड ऑल द गुड वर्क्स.
महाराज जी को दिखाइए। Now that was something. And मैडम एक बात बोलूँगा, Yes. आपके बारे में रिस्पेक्ट और बढ़ गया. The way you expressed yourself, and really, it was a revelation for all of us. So thank you very much. And ये फेयरवेल करते वक्त भी ये अच्छा होना चाहिए, इसके लिए बहुत लोगों ने कोशिश की है, उसकी नहीं कोशिश बहुत काम बहुत आई. लोग हैं, मुझे मालूम है। विशाल है, तो, आप yes. है, रोशन किधर है? So, रोशन को रोशन स्पेशल भी थैंक्स, है. इतना भाग दौड़ किया है, इतना इन्वॉल्व No है, doubt, इतना no सब है. विद्यासागर है, विशाल है, एंड उषा मैडम तो रिंग मास्टर थी. So, नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल आज का तो मेरे को जरूर बताना है. तो जैसे मैं आई तो जो मेरा जगह देखा, मैंने मेरे सीट देखा तो आंसू आ गई थी मुझे. आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट. ऑफ कोर्स ये फंक्शन तो होएगा, जो लेवल में होगा वो होगा, मालूम था. बट जो आप लोगों ने मुझे वेलकम किया, जो सजाया था मेरा जगह, The brainchild of Usha ma'am. ये वही तो मैं हमारा मकसद था. लाइफ लॉन्ग नहीं भूलूंगी. सब लोगों ने जो सुबह आए सभी ने बोला अरे वीना क्या तुम्हारा ये सजाया था. सो लाइफ लॉन्ग मैं नहीं भूलूंगी. थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग. एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग. अगर गुस्से में किसी का भी दिल दुखाया है तो सिंसियर अपॉलॉजी. सर पहले आपने सिंसियर अपॉलॉजी. मैडम मैं सॉरी बोल रहा हूँ. कई बार हॉट टॉक हमारे और मैडम का हुआ बहुत बार. रोहित भाई क्लोजिंग नोट में चलते चलते सॉन्ग हमारा नहीं कॉर्पोरेशन अभी बैंक कुछ का है, पैक था. अभी कुछ है. अभी छोड़ेंगे थोड़ी. कुछ और. हाँ